हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ नर्सिंग एकेडमी। आज जनरल नर्सिंग का MCQ सीरीज़ है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस है, जिसमें कम्युनिटी नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, साइकियाट्री, ऑब्स्टेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब मिला के मैंने एक सीरीज़ बनाया है MCQ, क्योंकि सामने ही बहुत सारा टेस्ट आने वाला है। तो सब मिला के एक बहुत अच्छे सा मॉक टेस्ट ये हो ही सकता है, तो इसीलिए मैंने सीरीज़ बनवाई है। तो शुरू से एकदम लास्ट तक ये सीरीज़ देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऑप्शन में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी वो आंसर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सीरीज़। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ रिकॉर्डेड विथ एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और पेरीमीटर। So what is anemometer? Anemometer is used for measuring wind speed and direction. Barometer is used to measure atmospheric pressure, and perimeter is the distance around the edge of any shape. So the rest of option, that is hygrometer, which helps to measure the amount of moisture in the air. So the correct answer is hygrometer. Drug used in the treatment of neonatal jaundice is phenobarbital, calcium gluconate, betamethasone, diazepam. Phenobarbital act in the liver and induce glucuronide transferase. So it is the drug of choice in case of neonatal jaundice. The correct answer is phenobarbital. Most common cause of death in children below 5 years of age is RTI, diarrhea, accident, prematurity. The correct answer is RTI, respiratory tract infection. The backbone of public health nursing is home visit, recording, health education, immunization. So the correct answer is home visit. Cracked pot sound on percussion over hydrocephalus baby is called Chadwick sign, Homan sign, Karnick sign, Meswan sign. So at first, what is Chadwick sign? Chadwick sign is the bluish discoloration of the cervix, vagina and labia due to blood flow. Homan sign, it is the pain in the calf of leg upon dorsiflexion of the foot with the leg extended, that is diagnosis of thrombosis in the deep veins of the area. So Chadwick sign है cervix का, Homan sign है deep vein thrombosis में. Now next is Karnick sign, which we can see in meningitis. So what is it? Severe stiffness of the hamstring causes an inability to straighten the leg when the hip is flexed to 90 degree. It is suggestive of meningitis. So rest of option, that is Meswan sign, that is crackpot sound on percussion over hydrocephalus baby. Correct answer is Meswan sign. Multi-drug therapy is treatment for TB, leprosy, HIV, all of the above. मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कौन कौन सा बीमारी में लिया जाता है? तो एट फर्स्ट टीबी में भी लिया जाता है, लेप्रोसी में भी, HIV में भी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज 7 days, 21 days, 14 days, within 6 months. Correct answer is 21 days. What is the maximum volume that can be given IM? IM इंजेक्शन जब हम देते हैं तो कितना वॉल्यूम मैक्सिमम हम दे सकते हैं? तो वो है 5 ml. तो देख लीजिए ऑप्शन में कहीं पे भी 5 ml नहीं है. 2 ml, 1 ml, 0.5 ml कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन 5 ml के आसपास में 6 ml आती है, तो करेक्ट आंसर है 6 ml. इसमें एक चीज़ और भी है, जब भी हम IM इंजेक्शन देते हैं तो 6 ml, 5 ml तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोगों को बॉडी मास पहले देखना होगा. कोई अगर बहुत ही थिन है तो उसमें हम 6 ml इंजेक्ट IM नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रेफर्ड एरिया होगा बटक्स.
UNICEF was established in the year of 1946, 1948, 1952, 1955. Correct answer is 1946. Recommended disinfectant used for handling spills is 10% sodium hypochlorite, 5% bleach solution, 1% sodium hypochlorite, 2% bleach solution. Correct answer is 5% bleach solution. Pacemaker of uterine contraction is AV node, SA node, Purkinje fibers, tubal ostia. यूट्राइन कंट्रैक्शन का पेसमेकर क्या है? वो है ट्यूबल ऑस्टिया एंड हार्ट का पेसमेकर है एसे नोड. इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज ट्यूबल ऑस्टिया. कैलकुलेट ईडीडी इफ एलएमपी वाज 7 मई 2016. मैंने एक वीडियो बना दिए है, तो कैसे ईडीडी हम कैलकुलेट करेंगे एलएमपी से, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा. अभी के लिए इसका आंसर बता दीजिए. तो देखिए यहाँ पे 7 मई 2016 एलएमपी है, तो अगर हम नैगल्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 7 मई के साथ हमें 9 महीना जोड़ना होगा पहले, तो वो आ जाएगा फरवरी. तो अभी 7 के साथ हमें और 7 ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 14. सो द करेक्ट आंसर इज़ 14 फरवरी 2017. अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई हैं और अच्छे से ये जानना है तो प्लीज़ सी द वीडियो. ऑलरेडी I have uploaded in my channel. Growth chart used in India has how many curves? 2, 3, 4 or 5? The correct answer is 3. Most common cause of post-measles death: RTI, weakness, diarrhea, fever. The correct answer is RTI. Lugol solution contains sodium bromide, calcium chloride, ammonium chloride, potassium iodide. Lugol solution is a medication and disinfectant used for the number of purposes. It is a solution of elemental iodine and potassium iodide together with distilled water. So in that case the correct answer is potassium iodide. Which of the following is known as heart of ICDS system? Mother and children, primary health center, Anganwadi, supplemental food. ICDS means integrated child development services, जिसमें चाइल्ड एंड उनके मदर को बहुत सारा सर्विस दिया जाता है, जिसमें से है टीचिंग मतलब एजुकेशन, सप्लीमेंटल फूड, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ टॉक एट्सेट्रा. सो ICDS सिस्टम का हार्ट क्या होगा, मतलब मेन चीज़ क्या है, वो है मदर एंड चिल्ड्रन. स्ट्रोक वॉल्यूम इज 50 ml, 70 ml, 90 ml, 120 ml. सो एट फर्स्ट हमें जानना होगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन. मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में जब सिस्टोल होता है तब लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट हो जाता है, तो वो अमाउंट है 70 ml. उसे हम जानते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से. नेक्स्ट, इन लंबर पंक्चर द नीडल इज इंसर्टेड बिटवीन L3 and L4. The normal adult intracranial pressure is 0 to 15 mmHg, 60 to 70 mmHg, 80 to 100 mmHg, 20 to 40 mmHg. The correct answer is 0 to 15 mmHg. Most common type of schizophrenia is simple, paranoid, catatonic, hebephrenic. The most common is paranoid. GTT is an abbreviation of drop, liter, gallon, pound. So the correct answer is drop. Abnormal lateral deviation of vertebral column is lordosis, kyphosis, scoliosis, osteoporosis. So at first lordosis. What is lordosis? A carving inward of the lower back. अंदर की तरफ जो carving होता है उसे हम बोलते हैं lordosis. Kyphosis a forward rounding of the back. Scoliosis a sideways curvature of the spine.
Osteoporosis, a condition in which bone becomes weak and brittle. So the correct answer is scoliosis. The outer membrane of placenta is chorion, amnion, cotyledons, yolk sac, that is chorion. Rh negative mother delivered a baby. Which among the following tests is to be ordered for baby? Direct Coombs, indirect Coombs, blood culture, Rh factor. लेबर रूम में कोई भी अगर RH नेगेटिव मदर आती है, उनका अगर एक बेबी डिलीवरी होने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि बेबी का ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमें पहले से क्या करना होता है, कुछ इंजेक्ट करना पड़ता है और कुछ टेस्ट करना पड़ता है। तो वो टेस्ट माँ के लिए है इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट एंड बेबी के लिए है डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट। In measles, cobalic spots are seen in prodromal stage, post-measles stage, eruptive stage, anytime. The correct answer is prodromal stage. The amount of moisture. National Family Health Survey is done every 6 months, 5 years, 10 years, 2 years. The correct answer is 5 years. A nurse is aware that the best place to detect fetal heart sounds in the first trimester of pregnancy is above the umbilicus, at the umbilicus, below the symphysis pubis, above the symphysis pubis. तो फास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फास्ट ट्राइमेस्टर में यूटेरस एक पेल्विक ऑर्गन ही रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल जो पोजीशन है अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, वहीं पे ही हमें फीटल हार्ट साउंड चेक करना होगा। तो द करेक्ट आंसर इज अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन 12, 14, 10, 16. The correct answer is 14. Diaper rashes most commonly caused by streptococci, Staphylococcus aureus, E. coli, diphtheria. The correct answer is Strep aureus. At 8 weeks of gestation, the uterus looks like small unripe pear, large orange, cricket ball, size of grapefruit. The correct answer is large orange. So this is all about the today's MCQ series. अगर आप लोगों को और भी MCQ सीरीज़ देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन बिलो। थैंक यू।